No? Abhay. You going to translate? I can, but I think you can ask. Is he coming? I think everyone understands English here. Huh? Those who are sitting, I think everyone understands English. Oh. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Naranjana Jai Jasoda Yamuna Kiravana Chari Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parvachakachaya Statara Satashi Shrimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parvachakachaya Astatara Sata Shri Shrimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Anantikoti Vaishnavindi Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavrinda Ki Shri Radha Krishna Gopi Gopinatha Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mathura Dham Ki Shri Dwarka Dham Ki Shri Mayapura Dham Ki Shri Navadvip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Tulsi Devi Ki Bhakta Devi Ki Samaveda Bhakta Vrinda Ki His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki. Jagat Guru, Savior of the whole world, Srila Prabhupada Ki. Ocean of Mercy, Srila Prabhupada Ki. Gaur Premanandi.
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Shishi Guru and Garanga. Hari Hari Bol. Nama Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale. Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamani Namaste Saraswati Deve Gaur Vanavacharni Namaste Sinyavadi Pasacharista. So today's verse is the 10th canto, chapter 9, verse 9. Mother Yasoda binds Lord Krishna. And today is also the auspicious disappearance day of Ramanuja Acharya. I'll speak a little bit on that also. Srimad Bhagavatam 10:9 पे आप चर्चा करेंगे और आज साथी श्री रामानुजाचार्य की जो भागवत है उसका चर्चा करेंगे. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devam Saraswatim Vyasam Tatodayam Mudirajat Nasta Presa Padreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki. One second. Make sure no disturbances from the cell phones. If you can put your cell phones on Do Not Disturb, I'd appreciate it. Yeah. Okay. Tam Atta Yastim Prasamiksha Satravas Satwaras Tato Varuhyaya Pasarsara Varuhyapa Varuhyapa Sasara Bit. That's easy for you to say. Varuhyapa Sasara Bitavat Gopi Anvadavan Na Yam Apa Yoginam Shamam Pravestum Tapasaretam Mana Tamata Yastim Prasamiksha Satvaras Tamata Yastim Prasamiksha Satvaras Tato Varuhya Pasasara Bitavat Tato Varuhya Pasasara Bitavat
Gopanya Vadavanayam Apayoginam Gopiyan Vadavanayam Apayoginam Shamam Pravestum Tape Seratam Manaha Shamam Pravestum Tapaseratam Manaha Tamata Yastim Prasamiksha Satvaras Tamat Prasamiksha Satvara Tato Varuhyap Papsasara Bitavat Tato Varuhyapasasara Bhitava Gopan Vandavanayam Apayoginam Gopyanyavadhavanyayamap yoginam Shamam Pravestum Tapaseratam Manaha Shamam Praveshtum Tapaseritam Manaha Tamat Yashtim Prasamiksha Satvara Tato Varuhyapasasara Bhitavat Gopyanyavadhavanyayamap yogina Shamam Praveshtum Tapaseritam Tamat Yashtim Prasamiksha Satvara Tato It's going to be translated. You can leave them up. Leave them up. Tamat Yashtim Prasamiksha Satvara Tato Varuhyapasasara Bhitavat Gopanyavadhavanyayamap yoginam Shamam Praveshtum Tapaseritam Manaha Tamat Yashtim Prasamiksha Satvara Gopanyavadhavanyayamap yoginam Shamam Praveshtum Tapaseritam Manaha Mataji's? Tamat Yashtim Yashtim Prasamiksha Prasamiksha Satvara Satvaras Tato Varuhyapasasara Bhitavat Gopanyavadhavanyayamap yoginam Shamam Praveshtum Tapaseritam Manaha Tamat Yashtim Prasamiksha Satvara Tato Varuhyapasasara Bhitavat Gopanyavadhavanyayamap yoginam Shamam Praveshtum Tapaseritam Manaha Tam Tam unto Mother Yasoda. unto Mother Yashoda Ata Yastim At Yashtim carrying in her hand a stick. carrying
Prasamiksha. Prasamiksha. Krishna, Krishna, seeing her in that attitude. seeing her in that attitude. Satvara, Satvaraha, very quickly. very quickly. Tataha, Tataha, from there. from there. Avaruhya, Avaruhya, getting down. getting down. Apasasara, Apasasara, began to flee. began to flee. Bitavat, Bhitavat, as if very much afraid. as if very much afraid. Gopi, Gopi, Mother Yasoda, Mother Yashoda, Anvadavat, Anvadavat, began to follow him. began to follow him. Na, Na, not. not. Yam, Yam, unto whom? unto whom? Apa, Apa, failed to reach. fell to reach. Yoginam, Yoginam, of great yogis, of great yogis, mystics. mystics. Shamam, Shamam, who could reach him. who could reach him. Pravestum, Praveshtum, trying to enter into the Brahman effulgence or Paramatma. to enter into Brahman effulgence or Paramatma. Dabasa, Tapsa, with great austerities and penances. with great austerities and penances. Iritam, Iritam, trying for that purpose. trying for that purpose. Manaha, Madaha, by meditation. by meditation. Translation: when Lord Sri Krishna saw his mother, stick in hand, he very quickly got down from the top of the mortar and began to flee as if very much afraid. Although yogis tried to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the effulgence of the Lord with great austerities and penances, they failed to reach him. But Mother Yasoda, thinking that same personality of Godhead, Krishna, to be her son, began following Krishna to catch him. अनुवाद। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हो। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। So, purport, by His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki. Jai. Yogis, mystics want to catch Krishna as Paramatma, and with great austerities and penances, they try to approach him, yet they cannot. Here we see, however, that Krishna is going to be caught by Yasoda and is running away in fear. This illustrates the difference between the bhakta and the yogi. Yogis cannot reach Krishna, but for pure devotees like Mother Yasoda, Radha Madan Mohan ki. This illustrates the difference between the bhakta and the yogi. Yogis cannot reach Krishna, but for pure devotees like Mother Yasoda, Krishna is already caught. Krishna was even afraid of Mother Yasoda's stick. This was mentioned by Queen Kunti in her prayers. Bhaya bhavanaya stititasya, Bhagavatam 1.8.31. Krishna is afraid of Mother Yasoda, and yogis are afraid of Krishna. Yogis try to reach Krishna by Jnana Yoga and other yogas, but fail. Yet although Mother Yasoda was a woman,
Krishna was afraid of her, as clearly described in this verse. तात्पर्य, योगी जन कृष्ण को परमात्मा रूप में पा लेना चाहते हैं और बड़ी बड़ी तपस्याओं द्वारा उन तक पहुंचना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाते। किंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि कृष्ण यशोदा द्वारा पकड़े जाने वाले हैं और वे भय के मारे दूर भाग रहे हैं। इससे भक्त तथा योगी का अंतर पता चलता है। योगी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता, किंतु माता यशोदा जैसे भक्तों द्वारा कृष्ण पहले से ही पकड़े हुए हैं। कृष्ण तो यशोदा जी की छड़ी तक से भयभीत थे। इसका उल्लेख महारानी कुंती ने अपनी स्तुति में किया है। भागवतम 1:8-31 भय भावनया स्थितस्य। कृष्ण अपनी माता यशोदा से भयभीत हैं और योगी जन कृष्ण से। योगी जन ज्ञान योग तथा अन्य योगों द्वारा कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, किंतु उन तक पहुंच नहीं पाते। माता यशोदा की स्त्री होते हुए भी कृष्ण उनसे भयभीत हैं, जैसा कि श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। I was born in the darkness of ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pastacha Destatare. So, Atato Brahma Jigyasa. This human form of life is meant to find God and the absolute truth. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह जो मानव शरीर है इसका उद्देश्य है भगवान को जानना। And throughout the ages there have been tremendous scholarship, research, tapasya, practice of sadhana, bhakti, practice of archana, vigraha, so many practices just to find out Atatta Brahma Jigyasa. तो इतने सारे सालों में बहुत सारी तपस्या हुई है, शोध हुए हैं, सिर्फ यही ब्रह्म को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए। I was reading a little bit about the 4 sampradayas today before class. तो कक्षा के पहले मैं थोड़ा सा चारों संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर रहा था। And we have Rudra Sampradaya headed by Vishnu Swami, right? तो रुद्र संप्रदाय जिनमें प्रमुख हैं विष्णु स्वामी। Then we had Nimbarka Swami, and that was Kumar, the 4 Kumaras. फिर चारों कुमारों के संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य प्रमुख हैं। And then there was Madhvaracharya, who is head of the Brahma Sampradaya, which we are part of. तो हम जिस ब्रह्म समुदाय के हिस्सा हैं उसमें मध्वाचार्य हैं प्रमुख। And then there's Ramanujacharya, who's today is his disappearance day. And he head up the Sri Sampradaya, Lakshmi Sampradaya. तो जिस श्री लक्ष्मी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व श्री रामानुजाचार्य करते हैं, आज उनकी तिरोभाव तिथि है। Individually, all of them did incredible preaching across the subcontinent of India. तो व्यक्तिगत रूप से चारों संप्रदाय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ज्यादा प्रचार किए। And they attracted the most austere tapasvis, dedicated bhaktas that the world had to possess. और उन्हें बहुत सारी तपस्वी और समर्पित भक्तों को आकर्षित किया। And from them they had disciples, and they had disciples, and they had disciples. और फिर वे अपने शिष्य दर शिष्य बनाते गए। And all the spreading of all that knowledge and all the austerities and
and yajnas performed by them, there was one goal. तो उन सब ने जो ज्ञान को फैलाया और जो भी तपस्या को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, And that goal was Atata Brahma Jigyasa. और वह था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. And when we finally reached the top goal of all knowledge of all austerities and penances in Jagya, और यही जो है सारे ज्ञान, तपस्या, सारे जो यज्ञ हैं, उनका यही चरम लक्ष्य है. we find that the absolute truth, the supreme personality of Godhead, the cause of our causes, is a little baby being chased by his mother. और हम ये जानते हैं कि जो परम सत्य है, जो सभी कारणों के कारण है, वह है भगवान श्री कृष्ण, और उनको माता यशोदा दौड़ा रही हैं. And people who are not Vaishnavas just think we're crazy. और जो लोग वैष्णव नहीं है, वो हमें मूर्ख समझते हैं. But Krishna cannot be known by erudite scholarship. लेकिन कृष्ण जो है विद्वतापूर्ण ढंग से नहीं जाने जा सकते. Not by austerities and penances. ना ही किसी तपस्या योग बल से. Not by any amount of erudite scholarship. ना ही किसी प्रकार की प्रकांड पांडित्य से. He comes only by the loving devotional service of his devotees. वह सिर्फ प्रेममयी भक्तिमयी सेवा के अपने भक्तों के द्वारा की जाती है, उससे जाने जा सकते हैं. So to begin the path, Krishna says, Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshana. और इसकी शुरुआत करने के लिए भगवान कृष्ण बताते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः. Just try to learn the truth by approaching the bona fide spiritual master. आप परम सत्य को जानने करो एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर. Inquire from him submissively and render service unto him. उनसे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो. The self-realized soul can impart knowledge unto you, for he has seen the truth. तो तत्वदर्शी आत्मा आपको ज्ञान प्रदान कर सकती है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है. Tattvadarshana. He's seen the truth. तत्वदर्शिना यानी कि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है. We're not understanding the truth because we're under the conception that we are made of matter. तो हमने सत्य का दर्शन नहीं किया है क्योंकि हम अभी देहात्म बुद्धि में हैं. I heard Srila Prabhupada say yesterday, they think that there is no soul, there is no consciousness. तो मैं श्रील प्रभुपाद को कल सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि वो कहते हैं कि कोई आत्मा नहीं है. Or that consciousness is just a byproduct of the ingredients of the material world. और या फिर वो सोचते हैं कि ये जो चेतना है वह भी इसी भौतिक जगत का हिस्सा है. That means just the mixture of blood and bone and mucus and bile. और यह सिर्फ खून, हड्डी, कफ, वात, पित्त इसका हिस्सा है. The Prabhupada said, so do it. Do it then. And then Prabhupada said, you go to those slaughterhouses where you're slaughtering and there's so much blood and bone and mucus. You put together one human being. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं, अगर ये भौतिक जगत के हिस्सा है तो इसे करके दिखाओ. कसाई घर में इतना सारा खून, हड्डी, सब कुछ है, उसमें से एक इंसान बना के दिखाओ तो समझे. They can never do. वो कभी नहीं कर सकते. They're cheaters, liars and cheaters. वे सब झूठे और धोखेबाज हैं. So, Tattvadarshana, he sees what is Krishna. One time, there was one reporter who came to Srila Prabhupada in Los Angeles. तो तत्वदर्शी यानी कि उन्होंने सत्य को देखा है. एक बार की बात है, लॉस एंजलिस में एक रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद के पास आया. And he was interviewing Srila Prabhupada. और वह श्रील प्रभुपाद से साक्षात्कार कर रहा था. And he was brought into the temple, just like all these people here being brought into the temple. जैसे यहाँ पे लोग आए हैं, वैसे वो भी मंदिर में आए. And there was an offering being made, like this, just like this. जैसे यहाँ पे भोग लग रहा है, वैसे भगवान को भोग लग रहा था. And so, when he went into Srila Prabhupada's room, he said, so, what is this, offering of food? What does, you say you give it to God
and then God eats it. तो श्रील प्रभुपाद के पास गया कमरे में और फिर पूछा कि ये भगवान को क्या भोग लग रहा है, And then you eat it. और आप बोलते हैं कि आप भगवान को भोग लगाते हैं और वो खाते भी हैं और फिर आप खाते हैं. And there were several different devotees there, our god brothers. One was a friend of mine, very dear friend of mine, Rameshwar Das. And Rameshwar tried to explain, like in theory, we offer to God and God eats it, he eats it, but it's blessed, but, it's going like that. तो वहां पे हमारे कई सारे गुरु भाई थे और मेरे उसमें से एक परम प्रिय गुरु भाई श्रीपाद रामेश्वर प्रभु भी थे. तो बहुत ही सैद्धांतिक रूप से बता रहे थे कि भगवान किस प्रकार से खाते हैं. And Srila Prabhupada is sitting right there. और श्रील प्रभुपाद उसे सुन रहे थे. He said, no. श्रील प्रभुपाद उसे पसंद नहीं किया और बोले नहीं. He said, God comes down, he eats it. उन्होंने बोला भगवान खुद आते हैं और खाते हैं. He eats the food. वो खाते हैं. And then he leaves the food. और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं. He said, I am not a fool like you. मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ. I can see him eat the food. मैं उनको देख सकता हूँ कि वो खाते हैं. Rameshwar said, oh yes, of course. Well, we're talking Mahabhagavat, in that sense, of course he is eating. तो फिर रामेश्वर प्रभु ने कहा कि हाँ निश्चित हम यहाँ पे महाभागवत भक्त से बात करें तो उनके माध्यम से जरूर ही भगवान खाते हैं, वो देख सकते हैं. So you have to learn the truth by seeing through the eyes of the pure devotee. तो आपको जो है परम सत्य को एक शुद्ध भक्तों के दृष्टिकोण से देखना है. And the interesting thing, and everyone has that experience, when you surrender to that principle and you just give up your mental speculation and your doubts. तो रोचक बात यह है कि सबने इसका अनुभव किया है कि जब आप उनकी शरण लेते हैं और अपने सारे मनगढ़ंत विचारों को त्याग देते हैं, and you see through their eyes, और फिर आप उनके नजरों से देखते हैं, that's when you start to get ruchi. तब आपको रुचि मिलना प्रारंभ होता है. Then you get a taste. And the more you surrender to that process of seeing through the eyes of our acharya, not seeing through our mundane, speculate through these eyes, this brain, whatever karmic ability we have, don't go through that, because that will always create misery for you. तो तब आपको भक्ति में स्वाद मिलना चालू होता है. जब आप आचार्यों के दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने मनगढ़ंत मन और विचारों से आप देखेंगे तो आपको सिर्फ कष्ट ही मिलेगा. Janma karma cha medavyam evam yovitatata tyaktvan deham punar janma naitimam etu surjana. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन. It's nice to hear it twice. Say it's nice to hear it twice. ये दोबारा सुनने में अच्छा लग रहा है. So janma, that's appearance, birth. Karma is activities. Krishna says, one who understands the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving this body, in this, return to this material world, but attains my supreme abode. तो भगवान बताते हैं कि जो भी उनके प्रकट होने का और होने का दिव्य स्वभाव समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम जाते, इस भौतिक जगत में नहीं आता. You see, Krishna is achintya. आप देख सकते हैं कि कृष्ण एक He is inconceivable. अचिंत्य हैं. You can't ever wrap around, like, even if you studied all the Shastra, memorized, no, not studied, but you at verbatim could memorize every shloka in every Vedic literature that ever existed, listen, memorized every tape, and from every acharya you've ever heard, and practice non-stop, gave up eating and sleeping, and all you do is say, still you cannot understand achintya. तो आप चाहे पूरे शास्त्रों को याद कर लें, जितना भी आप शास्त्र जान सकते हैं, या फिर जितने भी आचार्यों को सुन लें पांडित्यपूर्ण ढंग से, लेकिन फिर भी आप कृष्ण को नहीं जान सकते, वे अचिंत्य हैं. So the devotees that surrender to the principle
of everything is transcendental, is always feeling transcendental ecstasy. And they know, because he's a chincha, therefore it's all possible. A chincha means it's not conceivable, and everything is beyond our realm of understanding. I mean, it's beyond our realm of understanding its full capacity. तो जो भक्त जानते हैं कि भगवान हमेशा दिव्य आनंद में रहते हैं, उनको हमेशा दिव्य आनंद मिलता रहता है, क्योंकि भगवान अचिंत्य हैं, तो उनके माध्यम से वे सदैव दिव्य रस का आस्वादन कर पाते हैं. So, great rishis and aesthetics and performing tapasvis, performing penances to become realized, to become detached from this world, trying to find the supreme consciousness. Mother Soda just picks up a stick and said, I'll give him a spanking. तो जो बड़े बड़े ऋषि और तपस्वी हैं, वो भगवान को जानना चाहते हैं, उन पर ध्यान लगाना चाहते हैं. माता यशोदा उनको छड़ी लेकर दौड़ाती हैं. And that stick was giving Krishna so much ecstasy. छड़ी से भगवान कृष्ण को बहुत ही आनंद प्राप्त होता था. So, month of Damodar in Kartik, we worship all the paraphernalia of Mother Yasoda. And तो जो दामोदर का महीना होता है, उसमें हम माता यशोदा के लिए जितना भी सामग्री है पूजा पाठ, उसमें हम and the actual Mahatmas, those who are totally surrendered to the conclusion, Vedascha Sabhaya Aham Eva Vejo Vedanta Krit Veda Ved Eva Chaham. और those who are realized to those conclusions that Krishna is the cause of by all the Vedas, he is to be known. Indeed, he is a compiler of the Vedanta, and he is a knower of the Vedas. तो जो सारे वेदों को जानते हैं, वे जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सारे वेदों के परम लक्ष्य हैं. And they're performing all their sadhanta, or their sadhana bhakti and their penances and so on. But Mother Yasoda is just simply thinking, I got to catch this little boy. I got to catch this little boy. और वो लोग सिर्फ अपनी साधना भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन माता यशोदा सोचते हैं कि मैं उस छोटे बालक को पकड़ लूंगी. And at the end of the day, they sing Yasoda Nandana Rajajana Ranjana. और आखिरी में हम सब गाते हैं यशोदा नंदन व्रजजन रंजन. They are chanting the glories of Mother Yasoda. हम यशोदा माता का गुण महिमा कीर्तन करते हैं. So how great is Mother Yasoda? तो माता यशोदा कितनी महान है. In the 5 rasas, the highest ras is conjugal ras. पांचों रस में सबसे महत्वपूर्ण है माधुर्य. But just below that is vatsalya ras. उसके बाद वात्सल्य है. Parental love. वात्सल्य. So vatsalya. Haribo. So Mother Yasoda, we cannot even estimate the platform of her level of relationship with Krishna. तो माता यशोदा का जो भगवान कृष्ण के साथ संबंध है, उसका हम आकलन भी नहीं कर सकते. But simply joining this Iskcon movement, we can all personally go and meet with Srimati Yasoda Devi and take dust of her lotus feet. तो लेकिन ये इस्कॉन से हम जुड़ गए हैं, इसलिए हम सब वहाँ वापस भगवत धाम जा सकते हैं और उनके चरणों का रज भी प्राप्त कर सकते हैं. And chant Yasoda Nandana Vraja Janam. और फिर वहाँ हम कीर्तन कर सकते हैं यशोदा नंदन व्रज जन रंजन. So so the austerity that Mother Yasoda is performing, because at the end of the day, Krishna says, Bhakya Mama Vinjananti Yavanyas Jasmitatvata. And Mother Yasoda is following that principle. तो माता यशोदा भी यहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, तो माता उसके लिए प्रयास कर रही हैं. Mother Yasoda, of course, is Nitya Siddha. She never comes to this material world under a conditioned state. तो माता यशोदा नित्य सिद्ध भक्त हैं, वह कभी भी बद्ध नहीं होती. She descended here from Goloka Vrindavan
5,000 years ago. वो 5000 वर्ष पूर्व यहाँ गोलोक वृंदावन में प्रकट हुई थी। And Krishna only appears here once in a day of Brahma. और कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक ही बार यहाँ पर आते हैं। And that is a day of Brahma is 4,600,000,000. Yeah, it's 4,300,000,000. Yeah, 4,300,000,000. Hold on, 4,320,000,000 years. No, is that correct? ये तो एक चतुर्युग है नहीं, एक चतुर्युग है। Times 2, which means actually it's 8,640,000,000 years. अगली मतलब 8 करोड़ 80 करोड़। You know how many? और एक How do you say that number? और ये 8,640,000,000. और ये करीब 800 करोड़ के I know you got आसपास। that crore thing going, but how many crores is that? ये 84 लाख के आसपास करीब साल। Okay, so Krishna comes once, and Mother Yasoda comes with him. तो कृष्ण उसमें सिर्फ एक ही बार आते हैं और माता यशोदा भी उनके पास साथ आती हैं। So Krishna just came like yesterday. It's only 5,000 years ago. तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जैसे कल ही आए थे, सिर्फ 5000 साल पहले। Prabhupada said this world is like an ephemeral flash, just boom, it's over. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह जो दुनिया है एक चिंगारी की तरीके से है जो किसी भी समय खत्म हो जाती है। He says a baby is 1 week old, it's 1 week dead. तो श्रील प्रभु बताते हैं कि एक बच्चा अगर एक सप्ताह का उसकी उम्र हो गई यानी कि एक सप्ताह उसकी मर हुआ। So me and my friend Gaur Shakti, we're 70 years dead. यानी कि जो 70 साल के हैं वो 70 साल मर चुके हैं। And the rest of you are somewhere in there too. और बाकी आप सब भी अपने अपने उम्र के हिसाब से मर गए हैं। But you take this life, you take this one life. लेकिन आप अपना एक जीवन लीजिए। And all your time, you engage it as Mother Yasoda is engaging it. और आप अपने पूरे समय इस प्रकार से नियोजित हुई है जैसे माता यशोदा यहाँ पे लगी हैं। What is Mother Yasoda doing? She's sweeping the floor माता यशोदा क्या कर रही हैं? झाड़ू लगा रही for हैं Krishna. कृष्ण के लिए। We sweep the floor for Krishna. हम भी झाड़ू लगाते हैं कृष्ण के लिए। She cooks for Krishna. वो कृष्ण के लिए रसोई करती हैं। We cook for Krishna. हम भी कृष्ण के लिए रसोई करते हैं। Right? She dresses Krishna. वो कृष्ण को वस्त्र परिधान पहनाती हैं। We dress Krishna. हम भी कृष्ण को कपड़े पहनाते हैं। All she talks about is Krishna. वे सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बात करती हैं। That's what we need to do, is always talk about Krishna. ये हमको भी करना चाहिए, सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बातें करना चाहिए। It's so brilliant. It's again a chincha, because as simple as that, we can counteract the result of millions of sinful births. तो यह कितना अद्भुत है, यह अचिंत है कि सिर्फ इतना करने से हमारे जो अनगिनत लाखों लाखों पापमय जीवन है उनको हम पार कर सकते हैं। So we know that famous story on the Lotus building where Srila Prabhupada is walking with Bhakti Swami on the top of the building. तो ये एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जो हम सब जानते हैं। पद्म भवन में श्री प्रभुपाद के साथ श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जा रहे थे। It was just the two of them. सिर्फ वही दोनों थे। And Srila Prabhupada said, you have had millions and millions. One time Maharaja said billions to me, but at least millions of births. तो जब गुरु महाराज ये बात बताते हैं, वो बता रहे थे कि तुम्हारे लाखों लाखों, एक बार करोड़ों भी बोले थे, लाखों जन्म हो चुके हैं। In all those births, you have simply been frustrated and suffered because you have not surrendered to Krishna. और उन सारे जीवन में आपने सिर्फ पीड़ा पाई है, प्रताड़ित हुई हो क्योंकि आपने कृष्ण की शरण नहीं ली। So just give one birth. You've already had millions, so give one. तो एक काम करो, सिर्फ अपना एक जीवन दे दो, पहले वैसे ही लाखों दे चुके हो। And just see what will happen. और फिर देखो क्या होता है। So we have all seen what has और फिर happened. हम सब ने देखा कि क्या होता है उससे। Now he is in Goloka Vrindavan. और अब वो गोलोक वृंदावन में है।
And everything that we do in our lives, और सब कुछ जो हम अपने जीवन में करते हैं, we must follow his example and Srila Prabhupada's example to just give everything to the service of Krishna. अब हमें श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज का अनुसरण करते हुए अपना सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए. We really don't have any time to waste. We have no time to waste. हमारे पास कोई भी इतना समय नहीं बचा है कि हम उस पर बर्बाद कर सके. In October 1977, I got the chance to be in Srila Prabhupada's room when he was very sick. तो अक्टूबर 1977 में जब श्रील प्रभुपाद अस्वस्थ थे तो मुझे उनके कमरे में सेवा मिली थी. And you cannot even imagine what a pain that was to see Prabhupada. He's so beautiful here. Prabhupada had not eaten for 6 months. तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसमें श्रील प्रभुपाद को देखकर कितना पीड़ा हुई थी. अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कितने सुंदर हैं, लेकिन उस समय श्रील प्रभुपाद 6 महीने से नहीं खाए थे. Prabhupada all his flesh was gone, and all there was virtually skin over bones. तो श्रील प्रभुपाद की पूरी जो मांस है वो गल गई थी, सिर्फ उनका जो त्वचा थी वो हड्डियों पे थी. Srila Prabhupada was so weak he could not even sit up, like we're all sitting, right? He could not even sit up. श्रील प्रभुपाद इतने कमजोर हो गए थे कि वो बैठ भी नहीं पा रहे थे. And the Kaviraj, and he was there. He was chanting most of the time, or he was carrying on correspondence. He was actually running the whole movement in that condition. It's a fact. It was a fact. Go ahead. तो लेकिन उस समय भी वो हरे कृष्ण जप किया करते थे प्रायः, और पत्राचार में सब सारे भक्तों से किया करते थे. पूरा आंदोलन चला रहे थे उस अवस्था में भी. And everywhere he was dictating letters. He couldn't lift his head. He couldn't even lift his head, and he was clearly making decisions that were just spot on. तो वे अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन फिर भी सारे पत्रों का वो सटीक उत्तर दिया करते थे. And then when he got done with his managerial work, और फिर जब अपने प्रबंधन के कार्यों में लगे थे, he rolled over, and Upendra had his dictaphone, and he would work dictaphone for Srila Prabhupada, and Prabhupada was translating Srimad Bhagavatam. तो प्रबंधन के कार्य से हटके वो जब उपेंद्र प्रभु डिक्टाफोन पकड़ते थे और फिर वो अनुवाद किया करते थे. He was not wasting his time. He's Mahabhagavad. He's a Nitya Siddha. He was not wasting his time, even when he couldn't even lift his head. तो एक नित्य सिद्ध महाभागवत थे. वे अपना एक क्षण भी उस समय भी नहीं बर्बाद करते थे जब अपना सिर भी नहीं हिला सकते थे. And I was sitting at his feet. I was there from after Mangal Aarti till 9 o'clock at night for 2 weeks. तो पूरे 2 सप्ताह तक मैं मंगला आरती से लेकर रात के 9 बजे तक उनके चरणों में रहता था. And I was trying to comprehend what Krishna is, what God is, what the universe is, how planets are moving in space. I mean, how water is, if you take water and try to understand how the different elements, Bhumir Apanolo, Vayu, Kamana, Buddhaevacha, Itiyam, Hankara, Itiyam, Dina Prakriti Astata. It's like you can't wrap your mind around it. और जब आप इस ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करें या फिर इसका एक तत्व को भी समझने का प्रयास करें, मैं कर रहा था उन तत्वों को समझने का प्रयास, तो नहीं कर पा रहा था. And seeing Srila Prabhupada in that condition, performing those activities, he didn't have to do anything. He already did everything. He already spread this movement all over the world. He already had written 60 volumes of books. He had already charmed the life of 10,000 disciples. He was so ill, and right to the very last moment, he was translating Srimad Bhagavatam. तो श्रील प्रभुपाद उस अवस्था में भी, उनको वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो पहले ही 60
पुस्तक लिख चुके थे, अपने 10,000 शिष्यों का जीवन को उन्होंने जीवंत बना दिया था, और फिर भी उस अवस्था में भी वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। But over the years, I realized he was translating Srimad Bhagavatam not for his own gratification. He was translating for all of you and myself. लेकिन फिर इतने सालों में मैंने ये समझा मेरे लिए लिख रहे थे। And after about a week of watching Srila Prabhupada, one day, Prabhupada kind of, well, they had propped him up. He was sitting up, right? And someone was massaging his back, and someone else was massaging his arms and so on. और करीब एक हफ्ते बाद किसी ने श्रील प्रभुपाद को जब उठा के बैठाया तो कोई उनका बाहें और कोई उनकी पीठ मसाज कर रहा था। And then Srila Prabhupada said, तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, please forgive me. Please forgive me for taking up your valuable time. उन्होंने कहा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका बहुत ही कीमती समय लिया है। Lord and Master, the Savior of this world, was apologizing to less than desirable people. तो जो जगत गुरु हैं और पूरा जो इस पूरे जगत का उद्धार करने वाले हैं, वे अवांछित लोगों से बोल रहे हैं कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। And then he started crying. और फिर वह क्रंदन करने लगे। And then all of us were crying. फिर हम सब रोने लगे। And I thought, who is this person? I'm clueless. I'm clueless. Even though I've been a devotee for 5 years and I read Prabhupada, it was so far beyond my understanding. और फिर मैं सोच रहा था कि भला यह व्यक्ति कौन है। मैं 5 सालों से भक्त रह चुका था, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं समझ पा रहा था कि क्या कौन है। So if we take inspiration from this and think, I've got so much strength in my body. I might be feeling bad, but I can sit up, I can walk, I can eat, right? This is how you succeed. This is the secret of success. Nothing else matters but surrendering to the instructions of the spiritual master. तो हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि भले ही हो सकता है हमें कुछ कमजोरी लग रही हो, लेकिन हम उठ तो सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें शक्ति मिलती है। यह सफलता का रहस्य है कि आप गुरु के निर्देशों को पूर्ण तरह से शरण लें उनकी। This is our wealth. We are the wealthiest people in the universe. तो यह हमारी संपत्ति है, हम इस दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। Because every second that we talk to each other about Krishna, क्योंकि हमारे पास जो हर एक क्षण है उस समय हम कृष्ण के बारे में बात करें। every second that we sincerely chant our rounds, हर क्षण हम यह सुनिश्चित करें अपना जप अच्छे से कर रहे हैं। every second that we try to give this Krishna consciousness to someone else, हर क्षण हम किसी और को भी कृष्ण भावनामृत देने का प्रयास करें। all of this goes into our transcendental spiritual bank account. तो यह सब हमारे जो एक दिव्य आध्यात्मिक खाता है उसमें जाएगा। You need to be very greedy to become a multi-trillionaire, a quadrillionaire with spiritual deposits तो आप in your bank account. के पास जो आध्यात्मिक संपत्ति है वो करोड़ों अरबों में होनी चाहिए। उसके लिए आपको लालची होना चाहिए। Because Prabhupada said it would be like light and illumination. You leave this body, you wake up in Goloka, and the first person, Srila Prabhupada said this, the first person you see will be reaching his hand down to you, and that will be your Guru Maharaj. And he'll take your hand and he'll put it into the hand of Krishna.
और फिर श्री प्रभुपाद ने बताया था कि यह जीवन एक बिजली की चमक की भांति है, और जब आप आंखें खोलेंगे तब आप देखेंगे कि जो आपके गुरु महाराज वो आपका हाथ पकड़ के आपके हाथ को कृष्ण के हाथों में थमा देंगे। That's what I want. I want to see Prabhupada's hand coming towards me. तो यही मैं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि श्री प्रभुपाद का हाथ मेरी तरफ आए। Hare Krishna. हरे कृष्ण। So, is there any questions or comments? Or Shakti Prabhu? Your last statement was one returns to the spiritual world, the first thing that they see. Start from the beginning. Start over. Your last statement, first of all, very nice. Thank you so much. Hare Krishna. The last statement you made when one returns to the spiritual world, the first thing they see is your spiritual master putting their hand in the hand of Krishna. That's practically speaking, that's what it means when the spiritual master brings you to Krishna. Haribol. Thank you, Prabhu. So, translate. तो इसका अर्थ ये है कि जो भगवान जो गुरु है हमारा हाथ पकड़ के कृष्ण के हाथ में आते ही साथ लेके गुरु को कृष्ण के पास आते हैं। Hare Krishna. It's not some theoretical thing. No. It's literally, he'll take your hand and he'll put it in Krishna's hand. They say, I've read that you pass out a bunch of times when you first get there. You fall unconscious. Krishna's hand. So that may happen for, a couple million years. I'm passing out. In New Vrindavan, Prabhupada, in 1973, I went to the Janmashtami. Was it 73? 72. Okay, that's true. Okay, that's right. It was 72. Oh, now it's all coming back to me. Actually, a very good friend of mine, Batu Gopal. Do you know Batu Gopal? He was temple president in Cleveland for a while, and he's wonderful, wonderful devotee. His daughter is named Ratna Radhika, and she is a disciple of Bhakti True Swami Maharaja. She's a very nice girl, and she actually was here in Ujjain. And if you look on these beautiful, what are they molding called? There's a one, huh? Okay, but you see the gold leafing on it? She put up all that gold leaf. She had a ladder. I think they even kind of like had her laying on her back, doing that. Anyways, he told me, actually, he was at this, at the Janmashtami celebration, and Prabhupada was talking about going back to Godhead, going to Krishna Loka. तो ये सत्य है कि जो गुरु हैं वो हमारा हाथ पकड़ के कृष्ण के हाथों में कर देते हैं। 1972 की बात है, श्री प्रभुपाद जब नए वृंदावन में गए थे तो वहाँ पे एक श्रीपाद बटू गोपाल प्रभु थे, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। उनकी पुत्री हैं रत्न राधिका माता जी, जिन्होंने ये पूरा जो गोल्ड लीफिंग है शैंडलियर के पास, उन्होंने वो सब किया है। So Prabhupada was saying, there's no ordinary thing going back home. He was talking about the glories of devotional service and the glories of serving the deities and what that all meant, and then how the soul can finally get out of the entrapment of this body and mind. And then he stopped and he paused like this, like he went into like a reflection. He's like looking out of the universe. He said, this is no ordinary thing, going back home, back to Godhead. But if you just chant these rounds, you will do it. And he said, everyone was leaning in, just kind of like you're all leaning in right now.
And everyone was like, I'm going to do it. तो श्री प्रभुपाद उस समय प्रवचन में बता रहे थे भगवत धाम जाने के विषय में कि कैसे आत्मा है वो कई सारे भौतिक तत्वों से अभी उसका आवरण है और वह किस प्रकार से यहाँ से निकलकर वापस भगवत धाम में जाती है। तो उस समय उन्होंने बताया कि यह बहुत ही दुर्लभ है भगवान के धाम जाना, लेकिन फिर आपका जितना भी निर्धारित जप है उसको अच्छे से करते हैं तो आप सब भगवान के धाम जा सकते हैं। तो सब उसको बहुत ही ध्यान से सुनने लगे श्री प्रभुपाद को और सोचे कि मैं निश्चित ही जाऊंगा। And one final point, there's two things, in my humble opinion, that I found over 52 years of being connected to Iskcon. For staying in Iskcon, first of all, that's a hard thing to do. But for also developing the taste for keep chanting. And the first thing is utsaha, enthusiasm. तो मेरे विनम्र मत में, मैं पिछले 52 सालों से हूँ कृष्ण भावनामृत में, तो पहली ये चीज है कि आपको कृष्ण भावनामृत में बने रहना है और दूसरी चीज है कि आपको रुचि उत्साह भी होना चाहिए जिससे आप हरि नाम को जप कर सके। And the second, which may be more important than utsaha, is do not commit aparadha against Vaishnavas. Do not offend devotees. और इससे भी महत्वपूर्ण है कि आप वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करिए। Because then you lose your ruchi. नहीं तो आप अपनी रुचि को खो देंगे। And everyone is motivated here because we've had a taste. And you know what I'm talking about. और आप आप सब यहाँ पे बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि आप सब में रुचि है। And finally, cooperate, work together. We need to work together. We're not against each other. We're all for it. And even when there are those, to be candid, even those that are a little bit offensive, a little bit arrogant, and we run into them, right? Just tolerate them and have compassion for them because they're not going to get ruchi. You should feel very sorry. I feel very sorry for you, Prabhu. You don't have to say that, but try to be sorry if you can influence them, but it is when you become lower than the straw on the street, more tolerant than the tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respects unto others. Right? That means everyone in Iskcon, specifically. Other people too, but most importantly, everyone in Iskcon. Because this was very, very important to Srila Prabhupada. तो और साथ में हमें भक्तों के बीच में मिलजुल कर भी रहना है, आपस में विरोधाभास नहीं करना है। यदि हमारे प्रति कोई हमें परेशान करता है या फिर अपराध करता है तो हम उनको सहिष्णुता पूर्वक उनको हम क्षमा कर देते हैं। और इस्कॉन में जैसे कि हमें तो हमारे सारे इस्कॉन के भक्तों के प्रति या फिर बाहर के लोगों के प्रति हमें अपने आप को एक तृण से भी ज्यादा विनम्र, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए और अपने लिए किसी मान की अपेक्षा ना करते हुए दूसरों को पूरा सम्मान देना चाहिए। Any other questions? All right, that means you all agree. Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Radha Madan Mohan ki, Premanandi. His Grace Udayanada Prabhu ki.